हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल MPPSC हब। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं हम उनको आज से स्टार्ट करने वाले हैं इन दिस वीडियो। सो आपको पता है कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्लास, एथनिसिटी, लैंग्वेज एंड जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स। ओके, सो यहाँ तक हम लोग अभी पहले कवर करेंगे, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। So first of all, role of caste in Indian politics. As you guys know that in India, since the ancient times, caste has been a really very prevalent topic. तो caste को अगर हम थोड़ा सा एग्जामिन करें तो this is the basic structure of caste since I think ऋग वैदिक period. कास्ट को इसी तरीके से डिवाइड किया जाता था. This was the basic structure of caste system. First of all, there were Brahmin. Then there were Kshatriyas. This was the clan which used to fight, and then Vaishya, and then the fourth one was Shudra. So this was the main pyramid of caste, you can say. So जो अब सिस्टम है वो भी इसके बेसिस पे थोड़ा सा अभी कंटिन्यू कर रहा है. सो if you'll talk about the role of caste in Indian politics, so as if we already know that casteism occurs very efficiently in India, and I think Indian democracy sometimes gets failed because of caste also. So you can say that it is one of the bottleneck in the Indian democratical system. So first of all, what will be the first point? Caste provides a structure of divisions and accommodations. Obviously, we know that caste definitely provides divisions in the society, and then political parties considered caste as a vote bank. ऑफ कोर्स कास्ट के बेसिस पे थोड़े से वोट भी मांगे जाते हैं कि पर्टिकुलर कास्ट के अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए हैं तो वो अपने जो कास्ट जितने भी उनकी कम्युनिटी होती है उनको वो अपनी तरफ कर लेते हैं कि आप हमें वोट करिए, भले ही उनसे ज़्यादा बेटर जो कैंडिडेट हो वो उनके ऑपोजिशन में खड़े हों. तो ये बहुत एक ड्रॉबैक हो जाता है इंडियन कास्ट सिस्टम में जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं. तो then in selecting candidates for elections, political parties often giving consideration to the caste composition of constituencies. ये होता है, we already know कि this already happens, and it definitely affects the efficacy of democracy in our country. Fourth point, caste system made available to the leadership the structural and the ideological basis for political mobilization. So this was the main thing which was occurring due to the caste system. Then what do you mean by caste? So caste is a social group that includes people of the same economic status, occupation or rank. जो सेम इकोनॉमिक स्टेटस होता है, ऑक्यूपेशन होती है और रैंक होती है, उसके बेसिस पे जो आप डिवीजन करते हो सोसाइटी में, तो वो आपको कास्ट का रूप लेता है. ओके, सो नेक्स्ट इज रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स. ये भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, एज वी ऑलरेडी नो दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट. वी डू नॉट, द इंडियन state, or we can say that India do not favors any particular religion. Every religion is respected, and every religion is allowed to be followed in India. Hence we call India as a secular state. तो religion की बात फिर कहाँ से आ गई? तो then the idea of communalism has been exploited to gain political power. For them it is a way to gather votes on the basis of religion. तो religion के basis पे थोड़े से votes आपको पता है कि मांगे जाते हैं. It इस चीज़ को समझाने का मुझे लगता नहीं है कि कोई भी है, कोई भी रीज़न, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट हैपेंस व्हेन देयर आर इलेक्शंस. फॉर्मिंग a party on the religion or caste spread intolerance and communal bias. ऑब्वियसली अगर रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे कोई पार्टी बनी है और वो सेक्युलर नहीं है तो वो डेफिनेटली
दूसरे रिलीजन वालों को टॉलरेट नहीं करेंगे, तो इट ब्रिंग्स इंटॉलरेंस, है ना। और कम्युनल बाइस भी हो गई, क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा फेवर करेंगे, और दूसरी कम्युनिटी के अगर कोई इश्यूज होंगे तो वो उनको इतना ज़्यादा फेवर नहीं करेंगे। Then third point, after independence, religious places are used for political publicity, and the religions sentiments of the people are excited in order to gain political control of the state. ये चीज भी होती है, जो रिलीजियस प्लेसेस होती है लाइक मॉस्क्स और टेम्पल्स और गुरुद्वारे, दीज आर यूज्ड फॉर पॉलिटिकल पब्लिसिटी. The leaders used to go there, and then they just try to make people believe that they are favoring every religion. So religion का यूज किया जाता है वोट्स को गेन करने के लिए. देन थर्ड इज द emergence of religion political party has endangered the secularism in India. Obviously ये जो religion political party वाला जो फंडा है, डेफिनेटली ये सेक्युलरिज्म के लिए थ्रेट है, बिकॉज if one party is deviated towards a particular religion, and they favors a particular religion, then it is not good for the people who belong to other religion, and not that particular religion which is followed by that particular party. So ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, and it is a major drawback in India. So now a religion की जो definition है वो हम देख लेते हैं. What is a religion? The religion is a collection of belief systems or cultural systems that relate humanity to spirituality and moral values. Next जो हमारा topic है वो है role of ethnicity in Indian politics. Then ethnicity क्या होती है? तो ethnicity we all know that it refers to physical characteristics as well as social traits that are shared by human population. जो एक particular population के बेसिस पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो फेस करी जाती हैं, जो भी एक पर्टिकुलर क्वालिटी अगर हो गई, कोई भी पर्टिकुलर अगर उनका बिलीफ सिस्टम हो गया, तो ये उनकी एथनिसिटी में आ जाएगा, है ना। अगर हम पर्टिकुलर देखते हैं कि राजस्थान में कोई पर्टिकुलर कल्चर फॉलो हो रहा है, इफ दे आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर क्विजीन, दे यूज टू ईट दैट पर्टिकुलर क्विजीन, देन महाराष्ट्र में क्विजीन अलग होता है, और दोनों का जो पहनावा है वो भी अलग है, तो ये उनकी एथनिसिटी में आ जाता है. सो दिस वॉज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एथनिसिटी. अब एथनिक क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे हो सकती है? तो इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर, देन नेशनैलिटी, ट्राइब, शेयर्ड लैंग्वेज एंड रिलीजियस फेथ. ये जो पॉइंट्स हैं, इन पांचों पॉइंट्स के बेसिस पे आप एथनिक क्लासिफिकेशन कर सकते हो. पॉइंट्स फर्दर क्या होंगे? Many political scientists consider that political movements centered on ethnic identity. Next point, democracy in traditional society leads to mobilization on ethnic lines. Ethnic challenges, if not dealt properly, can create threat to the territorial integrity. Of course, it happens. हम देखते हैं कि बहुत सारे जो revolts हैं, जो we are just seeing that Bodo land in Assam. So the Bodo tribe is continuously asking for their particular land and known as Bodo land, और वो बोल रहे हैं कि असम से आप अलग करिए इस चीज़ को, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए. तो ये एथनिसिटी के बेसिस पे ही कह रहे हैं वो, कि हमारी जो ट्राइब है वो पर्टिकुलर एथनिक है, और यहाँ के जो लोग हैं वो हमारी ट्राइब में नहीं फिट हो पाएंगे, तो हमें एक अलग ही लैंड चाहिए जिसका नाम बॉर्डरलैंड होना चाहिए. तो इस टाइप के इश्यूज आ सकते हैं फर्दर. देन वी आर मूविंग टू द रोल ऑफ लैंग्वेज इन इंडियन पॉलिटिक्स. तो लैंग्वेज का क्या रोल हो सकता है? आपको पता है दैट लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लाइक इन महाराष्ट्र, इफ अ लीडर स्पीक्स मराठी, और दूसरा लीडर है उसको मराठी नहीं आती है, तो उसको थोड़ा सा एक उससे कनेक्ट करने में लोगों को दिक्कत होगी. ये होती है चीज़ें in the linguistic basis. So the legal status of language as an official language of a country means that all official documents are published in that language only. Of course, language is utilized in political matters to unify,
organize and criticize in order to unify a political group. Then the use of he and other words implying the masculine in documents has been a political issue relating to women rights. Obviously थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है बिकॉज दिस इज मेंशन्ड इन द पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स एंड हम देखते हैं कि पॉलिटिकल आजकल पॉलिटिकल लीडर्स में वुमेन भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गई हैं. दे आर ऑल्सो कमिंग अप विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी. सो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जेंडर की. So what do you mean by political correctness? It describes the situation where language forms must be used to comply with national ideology. So this was the definition of political correctness. नेक्स्ट इज रोल ऑफ जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स. ऑब्वियसली ये तो हमें पता ही है क्योंकि हमेशा से जो वुमेन है वो कम रहती थी इंडियन पॉलिटिक्स में. ज़्यादातर हम देखते थे कि मेल जो लीडर्स हैं वो ही ज़्यादा एफिशिएंट हैं. बट आई थिंक अब काफ़ी जो फीमेल लीडर्स हैं वो उभर के आ रही हैं और काफ़ी इंटरेस्टेड भी होती हैं इन पॉलिटिक्स. सो इन द करंट पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड, especially of India, women are very poorly represented. Next point, the problem really stems from the role women play in India's patriarchal society. We know that India had a patriarchal society. Still, that patriarchal system has not been completely faded. So I think that the term patriarchal has created a very big effect on political system as well. So education of women definitely is not a priority for most families in India. So that is also a major reason you can say that the women are not aware of their political rights. They're not aware that how much seats they are getting in a panchayat if they just get a chance to stand in an election. So I think awareness की बहुत बड़ी problem है इंडिया में. Awareness नहीं होती तो problem होती है. Then the participation of women in politics of the country also suffers. A better democracy is a democracy where women not only have the right to vote but to be elected as well. ये बहुत ही important quote है और इस चीज़ को हमें थोड़ा सा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि वुमेन जितने जितने वुमेन लीडर्स हैं उनको इलेक्ट करें हम. आप देख सकते हैं कि इस बार जो है मैक्सिमम आई थिंक हाईएस्ट परसेंटेज है पार्लियामेंट में वुमेन लीडर्स का. सो आई थिंक different different scenarios में definitely it will start to work because now the awareness is getting ahead and sooner we will see that yeah, women are also getting into political system and they are also opting politics as their career. So yeah, this is it. Next हम political parties वाले topic से start करेंगे. So thank you guys. So just subscribe to our channel. जय हिंद, जय भारत.